बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जनाब सदर साहब, जनाब अब्दुल राशिद अगवान साहब, मोहतरम ख़वातीन, मोहतरम हज़रात, बहुत क्लियर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव सर ने दिया हम लोग के सामने। काफ़ी चीज़ें थी जो जब हम लोग मैटर तैयार कर रहे थे और उस वक्त वो सामने आई, और वो दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स विच आर देयर बिफोर द कोर्ट। मैं ऐसा ये करूँगा कि पहले आपको एक लीगल हिस्ट्री, उसकी टेक्निकल लीगल हिस्ट्री के से लेके चलूँगा, और उसके बाद फिर जो लेटेस्ट अभी जो जजमेंट आया है इस्माइल फारूकी के ऊपर, उसके रेफरेंस के कंटेक्स्ट में, जिसको उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर नहीं किया, इस बात को कि उसमें क्या चीज़ें थी, किस वजह से हम लार्जर बेंच का रेफरेंस मांग रहे थे और उन्होंने किन रीजंस के साथ उनको रेफर नहीं किया। हम सब लोग जानते हैं कि 1528 में हिस्ट्री तारीख बताती है बाबरी मस्जिद बनाई गई, मीर बाकी ने उसको तामीर किया, जो उस वक्त के एम्परर बाबर के नोबल मैन थे, और उसके जो दरवाजे के ऊपर पत्थर लगा था उसको ट्रांसलेट किया है, और वो ये कहता है, बाय द कमांड ऑफ एम्परर बाबर हुज जस्टिस, इंसाफ की बात करता है, जो एम्परर बाबर के बारे में, जो बाबरी मस्जिद अब तो नहीं, वो पहले जब ये पत्थर लगा हुआ था तो वो कहता है, बाय द कमांड ऑफ एम्परर बाबर whose justice is an edifice reaching up to the very height of the heaven, कि वो सातों आसमान ऊपर तक उनके इंसाफ का तराजू है। The good-hearted मीर बाकी built this alighting place of angels, कि उन्होंने फरिश्तों के उतरने के लिए जगह बनाई। तो ये बात उन्होंने अपने वहीं से इंसाफ से शुरू की, और 1528 के बाद से 350 साल तक उसमें नमाज होती रही, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, और मस्जिद के तौर पे वो कायम रही, चलती रही। 1857 में आकर के एक 17x21 का चबूतरा बनाया गया, जो बाहर की तरफ बनाया गया, थोड़ा सा दूर मस्जिद से, और उसको ये क्लेम किया गया कि ये जो है वो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम का। और उस वक्त के जो नवाब थे अवध के, उन्होंने ये किया कि डिफरेंट टाइमिंग्स कर दी कि वो उस चबूतरे पे जाकर के अगर कोई पूजा करना चाहे तो वो, और उसकी जो टाइमिंग है उसको फिक्स कर दिया कि वो डिस्टर्ब नमाज के साथ नहीं करे, लेकिन दैट वाज अ सेपरेट थिंग। तो पहली चीज़ जो वजूद में आती है वो 1857 में वजूद में आती है। उसके बाद जो लीगल इशू जो पहला क्रिएट हुआ वो 15 जनवरी 1885 में आकर के क्रिएट हुआ, 1885 में। महंत रघुबर दास साहब जो चीफ प्रीस्ट थे राम स्थान के उस वक्त के, अपने आप को उस चबूतरे का जो चीफ प्रीस्ट कहते थे, उन्होंने एक सब जज फैजाबाद के यहाँ ये दरख्वास्त दी कि हमको परमिशन दी जाए कि हम इस चबूतरे पे मंदिर कायम कर सके, मंदिर बना सके। और उस वक्त के जो जज थे पंडित हरि किशन सिंह, उन्होंने उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था, and he rejected the plea on the ground of threat to public order and other situations। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, if a temple were allowed to be constructed on the chabutra being so close to the masjid, and he doesn't say anything about the Ram Janmabhoomi or anything, he just says if a temple were allowed to be constructed on the chabutra being so close to the masjid, then it would lay the foundation of death and murder। He said that in 1885 कि अगर ये इजाज़त दी जाएगी कि उस चबूतरा के ऊपर मंदिर मस्जिद के इतने करीब बना दिया जाए तो वो एक बुनियाद रखेगा लाशों का या मौत का। And that was his observation in 1885। अच्छा, अब महंत साहब जब यहाँ से हार गए and then find an appeal, तो वो अपील में गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में। वहाँ पे अब वो अंग्रेज जज के सामने पेश होते हैं। ये जो जज थे जो यहाँ के थे पंडित हरि किशन सिंह, वो तो ये बात कह रहे हैं। अब अंग्रेज जज साहब जो हैं वो JEA चेम्बर्स, उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया डिस्प्यूटेड लैंड का और अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने भी खारिज किया अपील को कि मंदिर नहीं बनाया जा सकता, fan communal passion and all that. But then what he observed, this is where the mischief starts perhaps.
He says, I found that the masjid built by Emperor Babur stands on the border of the town of Ayodhya. It is most unfortunate that a mosque should have been built on the land especially held sacred by the Hindus. But as that occurred 350 years ago, it is too late now to remedy the grievance. All that can be done is to maintain the parties in the status quo. So despite rejecting that appeal, he made this observation. And these observations, you will realize later on what have they become. अच्छा फिर वो यहाँ से फिर अपील 1886 में फिर से सूट फाइल किया और वो फिर से डिसमिस हुआ और इस बात पे डिसमिस हुआ फिर से कि उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है आपके पास, देयर इज नो एविडेंस। लेकिन फिर एक रिकॉर्ड हुआ एक पैराग्राफ, वो पैराग्राफ ये है 25 मई 1886 में, दिस स्पॉट इज सिचुएटेड within the precincts of the ground surrounding the mosque, erected some 350 years ago, owing to the bigotry and tyranny of the emperor, who purposely chose this holy spot, which according to Hindu legends was the site of the temple. The Hindus seem to have very limited right of access to certain spots within the precincts adjoining the mosque, and they have from a series of years have persistently trying to increase those rights and to erect building on two spots, namely Sita ki Rasoi and Ramchandra ki Janbhoomi. He has to decide it on the legal technical grounds. On legal technical grounds, he dismisses it. But then what he passes is an obiter. He refers, वो एक सिर्फ एक passing remarks है, which are part of the judgment. उसमें वो ये सब बातें कह रहे हैं. In judicial, had this been a judicial, if you put it further appeal, then these remarks could be expunged. There is no need for such remarks. When you have decided something, you decided it on the basis of certain facts before you and the law before you, and not you can't have sketching attacks on anything, or an emperor or whatever. खैर एक वाकया और उसके बाद हुआ 1886 के बाद 1934 में एक फसाद हुआ अयोध्या में, और उसके अंदर कुछ हिस्सा मस्जिद का गिरा दिया गया, और उसके बाद फिर वहाँ पे की कोर्ट ने फाइन लगाया, और जो राइटर्स थे जो दंगाई थे उन्हीं से लेकर के मुआवजा उसकी दोबारा से तामीर मुकम्मल कर दी गई। अच्छा, ये तो हिस्ट्री आज़ादी से पहले की है, एंड देन एवरीथिंग वाज फाइन। 1949 में आज़ादी के बाद अब वो रात आती है 22 और 23 दिसंबर की, जिसमें सडनली 22 और 23 दिसंबर 1949 की उस रात में कहीं से मूर्तियां आकर के वहां रख दी जाती है। और दिस इज ऑल इन रिकॉर्ड, दिस नथिंग ऑफ माय ओन। Then this incident led to the first communal confrontation. Pandit Jawaharlal Nehru ordered Govind Vallabh Pant, the then Chief Minister of UP, to remove those idols. However, K.K. Nair, the TM of Faizabad, refused to remove the idols because he asserted that removing the idols will flare up the communal voids. Then people went to the court. The court said that till the finalization, status quo will be maintained. So what is the status quo? That the idols shall remain where they are. So by an unlawful intervention, an invasive act which puts these idols for the first time in 1949 on the midnight of 22nd of December. फिर अब वो then it was locked, क्योंकि वो उसको अंदर रख दी गई थी, उसको लॉक कर दिया गया क्योंकि स्टेटस को है, कोई कुछ नहीं करेगा। अब 1950 और 51 में आकर के गोपाल सिंह विशारद ने, a Sanatan Hindu and an inhabitant of the Ayodhya city, filed a suit on 16th of January 1950 in civil court, urging entitlement of worship, an unobstructed visit to idols, and sought a perpetual injunction restraining the defendants from removing the idols. The civil judge V.N. Chatta, on 19th of February that year, granted a temporary injunction, which was later on confirmed in his judgment of 3rd of March 1951, where the judge recorded it
as an undisputed fact that on the date of the suit, the idols of Ram, Lord Ram and others did exist on the site, and that the worship was being performed by Hindus, including the painter, though under some restrictions put by the executive authority. But this is all post factum. The first and foremost thing was that an act which has been illegally taken place, how can you shield it by way of a judicial order? So this judicial order first allowed that, okay, this worship can go on, and this was in 1951. उसमें हलफनामा है यूपी गवर्नमेंट का. डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद JN उगरे filed a written statement on 24th of April 1950 stating, 24th April को जो उनका बयान है 1950, the property in suit is known as Babri Masjid, and it has been for a long time in use as a mosque for the purpose of worship of Muslims. It has not been in use as a temple of Sri Ramchandra Ji. That was the affidavit of the UP government in 1950, saying that the intention which you have granted, but this is the position. ये correct position थी जो उस वक्त उन्होंने उनके हिसाब से. In paragraph 16, it added that as a result of said wrongful act, because of the result of that wrongful act in which the idols were being kept, a situation impairing public peace and tranquility was created, and public authorities had to intervene in order to prevent the breach of peace and tranquility. So therefore, the UP government at that time was very clear that this is a Babri Masjid and it is for the worship of the Muslims. It is not a temple of Ramchandra Ji. This was the affidavit that they filed on 24th of April 1950. And then Gopal Singh Bisharat, and there were 3 other suits which were filed. They went on. Another important thing happened. So this is regarding the opening of the locks in 1986. This is another interesting term. On 25th of January 1986, an advocate, Umesh Chandra Pandey, submitted a new application within the original suit number 2, 1950, filed by Gopal Singh Visharat, demanding the locks to be opened and Hindus to be allowed to worship the idols. It was a matter of astonishment that all the claimants or defenders of the case had died. उनका सबका इंतकाल हो चुका था जो लोग उस मुकदमे में थे. वकील साहब ने नई एक दरखास्त दाखिल की 25 जनवरी 1986 में आकर के कि हमको इसके ताले खोलने दिए जाए और हमें इसमें इजाज़त दी जाए वर्षिप की मुकम्मल. वो जो दरखास्त थी वो रिजेक्ट कर दी गई. फिर उसकी अपील दाखिल होती है. वो देखिए कितनी क्विक हो रही है द सीक्वेंस. An appeal was then filed against the referred order before District Judge K.M. Pandey on 31st of January 1986. 25 जनवरी 1986 में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल वो खारिज हुई. उसके बाद 31 जनवरी को सेम उसी मंथ में उसी साल में उसकी अपील दाखिल हुई. विदिन अ डे ऑफ दिस अपील 31 जनवरी को दाखिल होती है, 1 फरवरी को उसकी सुनवाई पे आ जाती है फाइनल हियरिंग की. और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ये ऑर्डर करते हैं सेम डे, डायरेक्टिंग द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फैजाबाद टू ओपन द लॉक्स, finding them to be an unnecessary irritant to the applicant and the other members of the community, and not to impose any restrictions or cause hurdle in the darshans of applicants and other members of the Hindu community. So in a very quick sequence of events, the locks get opened suddenly. The gates of Babri Masjid were unlocked in the presence of police authorities after the pronouncement of the judgment. On 3rd of February 1986, Muhammad Hashim filed a case in the High Court seeking a stay on the enforcement order of the District Judge Faizabad. The court gave an order on the same day to the maintenance of the status quo as existing. Again, it went on the same day. That status quo का order हो गया. मगर status quo is sort of a status quo ante. एक चीज जो हो चुकी है उसको स्टेटस को दे दिया कि अब ये जो हो गई है ये हो गई. बट हाउ हैज दैट हैपेंड? दैट इज विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. फिर इन अनदर मेजर इवेंट है उस सीक्वेंस में 1989 के बाद, वो 9 नवंबर 1989 का है जो शिलान्यास का हुआ और वहाँ कार सेवा हुई.
जितने भी सूट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा कि आप 1989 में कि उस पर सब स्टेटस को रहेगा और ये पोजीशन रहेगी, मगर फिर 6 दिसंबर 1992 को उसके बाद मस्जिद शहीद कर दी गई। फिर उसका लैंड का एक्विजिशन होता है। 67 एकर्स जो लैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती है। उसका जब एक्विजिशन होता है उसको चैलेंज करते हैं मुस्लिम पार्टीज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें वो जजमेंट आया इस्माइल फारूकी का। इसमें उन्होंने ये कहा कि मस्जिद जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, और आप नमाज जो है वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। वो जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और वो किस कंटेक्स्ट में है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन पैराग्राफ 82 है जो बहुत मशहूर था, बहुत लोगों ने उसको कोट किया। पैराग्राफ 82 इस्माइल फारूकी का 5 जजेस बेंच का ऑर्डर है। वो ये कहता है, there can be no reason to hold that a mosque has a unique or special status higher than that of place of worship of other religions in secular India to make it immune from acquisition by exercise of the sovereign or prerogative powers of the state. A mosque is not an essential part of the practice of the religion of Islam, and namaz by Muslim can be offered anywhere, even in open. Accordingly, its acquisition is not prohibited by the provisions in the Constitution of India. ये बात सामने आई 1994 में, 24 अक्टूबर 1994 में 5 जजेस बेंच ने ये व्यू दिया और ये कहा कि जो एक्विजिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है वो वैलिड एक्विजिशन है और वो कायम रहेगा। ये 5 जजेस बेंच का था। उसके 6 साल के बाद असलम बुरे वेंट टू द कोर्ट। उसके मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हुई है, उसके अंदर कोई चीज़ें ऐसी नहीं आई जैसा कि उन्होंने कहा। फिर 2010 में ये जो अभी मौजूदा फैसला है वो आया 30 सितंबर 2010 में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि उसको 3 पोर्शंस में उसको उस जगह को बांटा। जो सेंट्रल डोम है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी वो हिस्सा हिंदूज को दिया गया। निर्मोही अखाड़े को जो राम चबूतरा सीता की रसोई का हिस्सा था वो दिया गया, और 1/3 ऑफ द लैंड जो थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ। ये फैसला 2010 में आया। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और उसमें स्टे हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में अब जब बहस के ऊपर बात शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि आपने ये बात तो पहले ही कह दी है कि मस्जिद जो है वो एसेंशियल पार्ट ही नहीं है और मुसलमान कहीं भी अपनी इबादत कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ 82 है, और इसको भी हाई कोर्ट ने अपने इम्प्यून्ड ऑर्डर में बहुत एक्सटेंसिवली रिलाई किया है। तो जो एसेंशियलिटी, एक चीज़ बुनियादी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो चीज़ें किसी भी मजहब की उस मजहब के कोई भी डिनोमिनेशन की, सबसेक्ट की, जो उस मजहब की बिल्कुल एसेंशियल है, उसकी रूह है, उसके बिना वो मुकम्मल नहीं हो सकता, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। वो चीज़ें उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको पहली चीज़ ये साबित करनी पड़ती है कि मेरा जो प्रैक्टिस है या जो चीज़ भी है वो उस चारदीवारी के अंदर है, कि ये एसेंशियल पार्ट है, बिल्कुल लाजमी हिस्सा है मेरे मज़हब का। अगर ये मेरे मज़हब का लाजमी हिस्सा आपको साबित करना होगा अपनी किताबों और अपने टेक्स्ट से और अपनी प्रैक्टिस से आपको ये साबित करना होगा। तो जैसे ही आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये एसेंशियल पार्ट है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन की दीवार आपके आगे प्रोटेक्शन में आ जाएगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है और आप ये साबित करने में नाकाम होते हैं कि हाँ ये हमारे मजहब का हिस्सा तो है, लेकिन ये बिल्कुल उसकी रूह नहीं है, कि अगर आप इसको निकाल लेंगे तो मजहब पूरा नहीं हो सकता। इस बात को, इस एसेंशियलिटी के बेसिस के ऊपर उनका ये व्यू था, इस्माइल फारूकी में ये व्यू था कि आपकी मस्जिद एसेंशियल पार्ट तो है, मगर वो एसेंशियल पार्ट ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा लेंगे तो मजहब मुकम्मल नहीं रह जाएगा, बल्कि वो इस कंटेक्स्ट में वो कह रहे थे कि जो लैंड एक्विजिशन है, यानी कि लैंड एक्विजिशन अगर हो मंदिर का हो, गिरजा का हो, मस्जिद का हो, जैसे किसी भी मंदिर का हो सकता है, किसी भी गिरजाघर का हो सकता है, या किसी भी मस्जिद का हो सकता है, तो ऐसे ही सभी का हो सकता है। मगर कोई मंदिर मसलन ऐसा हो, या कोई मस्जिद ऐसी हो, या कोई गिरजाघर ऐसा हो, या गुरुद्वारा ऐसा हो जिसको अगर ले लिया जाए तो वो मजहब
मुकम्मल ही नहीं रह जाएगा वो नहीं लिया जा सकता। इस दलील को उन्होंने इसके अंदर डेवलप किया था पैराग्राफ 82 में। तो जब बहस शुरू हुई तो हम लोग ने जब ये बात रखी तो कोर्ट ने कहा कि तो पहले ऐसा करते हैं कि इस बात को ही देख लेते हैं कि इस्माइल फारूकी, क्योंकि 5 जजेस बेंच का ऑर्डर है और हम 3 जजेस में बैठे हैं, तो उसकी जो भी फाइंडिंग है वो हम पे बाइंडिंग है। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या हम इसको और 7 जजेस में भेजें या उसको लार्जर बेंच को रेफर करें, ताकि ये आपके इस मुकदमे में एक ऑब्स्टेकल ना बन जाए, क्योंकि आपको महदूद ना कर दें। फिर उन्होंने उसको बहुत देर उसकी सुनवाई चली, 7-8 हियरिंग्स हुई और हम लोग ने अपने कंटेंशंस रखे और अल्टीमेटली फिर ये ऑर्डर प्रेजेंटली पास हुआ 27 सितंबर को, वेरिन उन्होंने ये कहा 27 इसी साल की 27 सितंबर को ये ऑर्डर एम सिद्दीक में पास हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ऑब्जर्वेशन थी कि मस्जिद एसेंशियल पार्ट नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ लैंड एक्विजिशन के कंटेक्स्ट में थी, उससे ज्यादा उसको रीड नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने इस्माइल फारूकी को एक तरह से रीड डाउन कर दिया, उसका जो ताव था और उसका जो फोर्स थी उसको रिड्यूस कर दिया, और ये कर दिया तकरीबन कि वो 5 जजेस का जो फैसला है वो ताला इस चाबी से खुलेगा कि जब कोई एम सिद्दीक को रीड करेगा इस्माइल फारूकी को रीड करने के बाद तभी उसको मुकम्मल माना जाएगा। उसके जो 2 पैराग्राफ्स हैं, जिसने 82 पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसके कंटेक्स्ट में कहा, वो बहुत अहम है और उससे बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। इनका पैराग्राफ 58-59 है, अभी जो लेटेस्ट जजमेंट आया उसमें पैराग्राफ 58 में वो ये बात कहते हैं, द सेंटेंस, उसको कोट किया उन्होंने, द सेंटेंस a mosque is not essential part of the practice of the religion of Islam and namaz by Muslims can be offered anywhere even in open is followed immediately by the next sentence, that is, accordingly its acquisition is not prohibited by the provisions in the Constitution of India, which makes it amply clear that the above sentence was confined to the question of immunity from acquisition of a mosque which was canvassed before the court. First sentence cannot be read divorced from the second sentence which immediately followed the first sentence. So therefore what he was trying to say, वो बात ये कहना चाह रहे कि आप इसको तोड़ के अलग अलग करके ना देखिए, आप ये सेंटेंस इसका निकाल लीजिए और इसको कहिए कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ये सेंटेंस ऐसे है। तो वो ये कह रहा है कि आप ऐसा ना कीजिए, इसको पूरे मुकम्मल पस मंजर में देखिए। मुकम्मल पस मंजर उनके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये है कि वो लैंड एक्विजिशन के कंटेक्स्ट में है, कि लैंड को, यानी कि वो कोई भी सरकारी काम के लिए, किसी काम के लिए अगर किसी की लैंड लेना चाहे तो किसी का घर ले सकती है, वैसे ही कोई भी मंदिर और मस्जिद भी ले सकते हैं, इसलिए वो एम्पावर्ड है। फिर उन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में उसको और क्लेरिफाई किया, नो आर्गुमेंट्स having been raised before the Constitution bench that Ram Janmabhoomi Babri Masjid is a mosque of a particular significance, acquisition of which shall extend the right of practice of the religion, the court had come to the conclusion that by acquisition of mosque, rights under 25 and 26 are not infringed. We conclude that observation as made by the Constitution bench in paragraphs 78 and 82, which have been questioned by petitioners, were observations made in reference to acquisition of place of worship and has to confine to the issue of acquisition of place of worship only. The observation need not be read broadly to hold that a mosque can never be an essential part of the practice of religion of Islam. So that's how they have more or less clarified to that extent. So what I see in my humble comprehension, that more or less it clarifies the thing, and it's a victory for us in that sense, that what we were trying to prove was to limit the effect of that observation. And the entire effect of that observation is now being confined down by virtue of these 2 paragraphs 58 and 59. So 2 things essentially came out of this MCD. The first thing was that as far as हमारे जितने अंदेशे और apprehensions थे
कि इस्माइल फारूकी के इस फैसले से हमारा पूरा मुकदमा असरअंदाज होगा, वो उन्होंने कहा कि इससे नहीं होगा, उसको हटाया। दूसरी चीज, जो इम्प्यून्ड ऑर्डर 2010 का है, जहां जहां इस्माइल फारूकी को रिलाई कर रहा है, वहां वहां वो रीड डाउन हो रहा है। तो एसेंशियली इन पीस मील, यानी टुकड़े में, आपने ये तो ओवरकम कर ही लिया ऑब्स्टिकल, एज फार एज दिस पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल इज कंसर्न। सो देयरफॉर दिस हैज टू बी रेड इन टोटलिटी। इस्माइल फारूकी को अब एम सिद्दीक के साथ पढ़ा जाएगा। अब रिसेंटली जो हम लोग की अपीलें इस वक्त पेंडिंग है, तो अभी उसको सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने उसको मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि साहब ये डिले हो रहा है और आप इसकी सुनवाई जल्दी कराएंगे, जब एम सिद्दीक का फैसला आ चुका है। तो 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया कि सारी ये जो अपीलें हैं वो जनवरी के, अब जो आ रही है जनवरी, उसके पहले हफ्ते में इंशाल्लाह लिस्ट होंगी, और फॉर फिक्सिंग हियरिंग फॉर अप्रोप्रिएट बेंच, यानी तब वो ये तय करेंगे कि अप्रोप्रिएट बेंच कौन होगी और इसकी हियरिंग कब से कमेंस होगी, सिर्फ इस लिमिटेड पर्पस के लिए। तो अब जो सुनवाई, अब जो जनवरी में आने जा रही है, तो सुनवाई सिर्फ इतनी बात की है कि कौन सुनेगा और कब से सुनेगा। जो हम लोग के कंटेंशंस है, जैसा पहले भी कहा कि हम लोग के जो कंटेंशंस लॉ पे है, हिस्ट्री पे है, कस्टम पे है, यूजेज पे है, प्रेसिडेंस पे है, टेक्निकलिटीज पे है, दे आर ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। और जब अभी तो 10,000 वर्क से ज़्यादा का तो जजमेंट है जो 2010 का है, जो इम्प्यून्ड है, उसको पढ़ा जाएगा तो उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अगर रोज भी चलें तो वी विल टेक many hearings, many hundreds and hundreds of hearings in order to conclude that. Then the other party will give its own reading and its own way of reading and presenting it. That will again take hundreds of hearings. Thereafter we will give a rejoinder to that, what is our answers to that. So that's a very long way to go. It's a very long way. लेकिन अगर आप जो हिस्ट्री जो मैं आपके सामने इशारतन पेश कर रहा था कि उसमें जो इंटरवेंशंस हैं, जो लीगल इंटरवेंशंस हैं, वो उन कुछ इलीगल एक्ट्स हैं, यानी ज़बरदस्ती 22 और 23 दिसंबर की रात में मूर्तियाँ का आ जाना और उसके बाद उस पर स्टे हो जाना, फिर उसके बाद एकदम से फौरी तौर के ऊपर लॉक्स का खुल जाना, फिर अल्टीमेटली 1992 में फिर अगेन अ मॉब कम्स एंड डिमोलिशेस द एंटायर. So these two, apart from the legal angle, these two events of putting the idols in 1949 and then the demolition of mosque in 1992 are absolutely two illegal acts which everybody accepts. चाहे हम लोग हों या हमारे अगेंस्ट हो या कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी ये कहेगा ये दो इलीगल एक्ट्स हैं. अब उसकी लीगैलिटी, ओनरशिप की, लैंड किसकी है, वक्फ की है या किसी और की है, this is a suit which is a subject of challenge. But unfortunately, over the period of time, what has happened is that this particular dispute and this particular issue has captured the imagination of the entire country, including both the communities. And they have started Hindus and Muslims both have identified themselves with that issue. And that's a little unfortunate thing. We as lawyers are only defending what is as per the law, what the law prescribes, the law of the land. This is our land, it's our law, and we are defending that only. And the court, I think we have quite hopeful that we have some good judgment out of this, unlike what we have got from the High Court. Thank you very much.